Okay, now we take question number 5. Okay, question number 5 is what type of image is formed in a plane mirror? And its second part is on a cinema screen. Okay, now question number 5 is, in this question you have to tell what type of image is formed in a plane mirror. Okay, in a plane mirror virtual image is formed, virtual and erect image is formed. Virtual means it cannot be taken on a screen. Okay, so we will answer, in a plane mirror, in a plane mirror we get a virtual image. Okay, we get a virtual image. Okay, virtual image is one which cannot be obtained on any screen. Okay, this is the answer of part A. Now part B answer will be, the type of image which we see on cinema screen used to be a real one. Okay, on a cinema screen, on a cinema screen we get a real image. We get a real image. Okay, this will be the answer of question 5 part B. Okay, now come to question number 6. Move forward with question number 6. Question number 6 is, what kind of mirror is required for obtaining a virtual image of same size as the object? Okay, to obtain an image of same size and of virtual nature we need a plane mirror. Okay, to obtain, the answer will be, we will write, to obtain an image of equal size, an image of equal size and virtual, we need a plane mirror. Okay, we need a plane mirror. Okay, this will be the answer. In a plane mirror the image type will be of same size. सेम साइज की इमेज बनती है और कैसी होती है, वर्चुअल इमेज बनती है. ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द नेम ऑफ द फिनोमेना इन विच राइट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज इन ए प्लेन मिरर? ओके, जो फिनोमेना होता है जिसकी वजह से राइट साइड लेफ्ट साइड दिखती है किसी प्लेन मिरर में, और लेफ्ट साइड राइट दिखती है, राइट साइड लेफ्ट दिखती है, उसे बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन. ओके, द फिनोमेना नेम इज लेटरल इन्वर्जन. इट इज ड्यू टू लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन. Okay, it is due to lateral inversion that one see left side is left side as right side, left side as right side, right side, and right side as left side, right side as left side. Okay, तो the name of phenomena is lateral inversion. ऐसा lateral inversion की वजह से होता है. और आपने देखा होगा एम्बुलेंस पे जो एम्बुलेंस लिखा रहता है वो भी इन्वर्टेड लेटर में लिखा रहता है. वो इस वजह से लिखा रहता है कि अगर कोई एम्बुलेंस पीछे से किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रही है तो जो गाड़ी है, गाड़ी के रियर व्यू में, जो रियर व्यू मिरर में जो इमेज दिखाई देगी एम्बुलेंस की, वो हमको एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ दिखेगा, जबकि वो उल्टा लिखा होता है. वो लेटरल इन्वर्ट करके इमेज को हमको एम्बुलेंस पढ़ने में आएगा, जिससे कि जो आगे जाने वाली गाड़ी है वो साइड दे दे और एम्बुलेंस वाले को ओवरटेक करने में कोई भी दिक्कत, प्रॉब्लम ना हो. ओके, सो द फिनोमेना नेम इज लेटरल इन्वर्जन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is question number 8. Name the phenomena responsible for following effect. Okay,
when we sit in front of a plane mirror and write with our right hand, it appears in the mirror that we are writing with the left hand. Then answer of question number 8 will be same. It is due to lateral inversion. The name of the phenomena is, again, the name of the phenomena is lateral inversion. Okay. Lateral inversion. Okay. It is due to lateral inversion that when we sit in front of a mirror, then our right side appears to be left and left side appears to be right. Then the answer of question number 8 will be similar to of question number 7. Okay. Now come to question number 9. If an object is placed at a distance of 10 cm in front of a plane mirror, how far would it be from its image? Okay. इसमें पूछा गया है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर से 10 सेंटीमीटर पे पुट करा जाए, देन हाउ फार वुड इट बी फ्रॉम इट्स इमेज. तो ये अपनी जो ऑब्जेक्ट है इमेज से कितनी डिस्टेंस पे होगा. ओके. तो ये पूछा गया है गिवन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. मिरर से डिस्टेंस जो दे रखी है ऑब्जेक्ट की, वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर. ओके. 10 सेंटीमीटर. ओके. तो एक्चुअली क्या होता है, किसी प्लेन मिरर में जितनी डिस्टेंस पे प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, उतनी ही डिस्टेंस पे मिरर के बैक साइड में उसकी इमेज अपीयर होती है. यानी कि उसकी इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो मिरर के बैक साइड में या मिरर के पीछे उतनी ही डिस्टेंस पे दिखेगी जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट मिरर से रखा हुआ है. इस बात के लिए हम यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं. मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर से मान लीजिए 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लाइक दिस. ओके. लेट सपोज दिस इज 2 सेंटीमीटर. तो इसका जो इमेज होगा, वर्चुअल इमेज जो होगा, वो भी हमको 2 सेंटीमीटर पर ही दिखेगा इसके पीछे. ओके. 2 सेंटीमीटर. नाउ इन दिस क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट अब इमेज से कितना डिस्टेंस पे है. ऑब्जेक्ट इमेज से कितना डिस्टेंस पे है. तो ये डिस्टेंस इस क्वेश्चन में दिया हुआ 10 सेंटीमीटर. तो लेट्स से इट इज 10 सेंटीमीटर. तो 10 सेंटीमीटर पे ही इसका इमेज बनेगा. तो ऑब्जेक्ट से और इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी टोटल? 20 सेंटीमीटर. Then answer will be 20 centimeters. Okay. So we will write as the image of the object, as the image of the object will be at equal distance. Will be at equal distance. Equal distance. So distance between object and image will be object and image will be how much? It will be equal to 10 plus 10 equals to 20 centimeters. So we will write, here we are writing 10 plus 10 equals to 20 centimeters. This will be the answer. It means the distance between object and the image will be 20 centimeters. This is how we will answer question number 9. Okay. Now come to next question. Question number 10. Okay. What it has been given in the question number 10. So let's see. Question number 10. Which property of light makes a pencil cast a shadow when it is held in front of a light source? Okay. तो किसी पेंसिल को अगर आप रखोगे like this, I have taken this marker in front of this board, then I am
गेनिंग इट्स शैडो ऑन द बोर्ड। तो ये किस प्रॉपर्टी की वजह से होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट। ओके, लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है कि इट मूव्स इन रेक्टिलिनियर मोशन फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, दैट्स व्हाई it casts a shadow. Okay, the property of light in question number 10 we will write for the answer of question number 10. It is due to rectilinear motion of, or it is due to the motion of light on straight path, okay, that the light casts a shadow, okay, then light casts a shadow because it moves on a rectilinear path. Moreover, the light cannot pass through opaque objects. Okay, opaque objects से pass नहीं हो सकता, इस वजह से भी उसकी light cast होती है. Then we may also add in this, and also light cannot pass through opaque objects. Okay, this is the answer of question number 10. Now come to question number 11. The image seen in a plane mirror cannot be formed on the screen. What name is given to this type of image? Such type of image is called virtual image. Now question number 11. ऐसी इमेज को, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, ऐसी इमेज को हम क्या बोलते हैं जिसको हम स्क्रीन पे गेट नहीं कर सकते? देन सच टाइप ऑफ इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज. द इमेज which cannot be obtained, okay, on a screen is called a virtual image. Okay, is called a virtual image. और जिसको हम इमेज को स्क्रीन पे गेट कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? रियल इमेज बोलते हैं. सो द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11 विल बी अ वर्चुअल इमेज. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 इज फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल वर्ड. ओके, in question number 12 you have to fill in the blanks. What this is? When light is reflected, the angle of incidence and angle of reflection are equal. Okay, question number 12, it has been given when light is reflected, then angle of incidence and angle of reflection are. Now you have to write in this. Okay, then what will be here? Are equal. This will be fill in the blanks. Are equal. Okay, clear? Question number 12. Now come to question number 13, 14 and 15. Okay, in question number 13 it has been asked, state whether the following statement is true or false. In question number 13, a student says that we can see an object because light from our eye is reflected back by the object.
Yes, this statement is true. A student says that we can see an object because light from eye is reflected back by the object. Actually इसमें ये है कि कोई हमारी जो आईज है वो रिफ्लेक्ट नहीं करती, ये फॉल्स स्टेटमेंट माना जाएगा. इसका उल्टा होता है. द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स द लाइट एंड व्हेन इट इज इंसिडेंट in our eye, then we are able to see the object. Then object reflects the light, not our eye reflects the light. Okay, so this will be a false statement. So we will write in question number 13, answer will be the statement is false. In question number 13, statement will said to be false. Okay, ये उल्टा दिया हुआ है, फॉल्स स्टेटमेंट होगा. ये क्या दिया हुआ है इसमें बोला गया है कि अवर आईज रिफ्लेक्ट द लाइट फॉलिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, बट इट इज नॉट हैपन, इट डजंट हैपन. व्हाट हैपन्स? द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट एंड देन इट एंटर्स इनटू आवर आई एंड द इमेज इज फॉल ऑन आवर रेटिना. ओनली देन वी आर able to see any object. Okay, so this statement will be false. Okay, in question number 14, where is the image when you look at something in a mirror? Where is the image when you look at something in mirror? When any object is seen in a mirror, then image is formed at an equal distance. Okay, and behind the mirror. So we will write the image is formed. The image is formed at an equal distance. At an equal distance. The image is formed at an equal distance at which object is placed. Object is placed. But behind the mirror. Okay, however there will be no such image will be there. If you will go behind the mirror, then you will not find any image because it is a virtual one. Okay, moreover we can say that exactly image is formed on silver polish which used to be behind the mirror, and silver polish is protected by a red paint. Okay, so image is exactly formed on that polished part. Okay, but it appears to be at an equal distance behind the mirror. So we will say like this. Okay, now come to question number 15. Question number 15 is what? A ray of light strikes a plane mirror such that its angle of incidence is 30 degree. What angle does the reflected ray make with the mirror surface? Okay, इस क्वेश्चन में क्या है, हमको ये पार्ट इरेज करना पड़ेगा. ओके, इस क्वेश्चन में इंसिडेंट एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री. ओके, और पूछा गया एंगल कि रिफ्लेक्टेड रे सरफेस से कितना एंगल बनाएगी. सो आई एम राइटिंग हेयर 15 डिग्री. व्हाट इज द सिचुएशन हेयर? वी हैव टू केयरफुली आंसर. It has been given that incident ray of light is making 30 degree angle. Okay, this is angle 30 degree. Now what is asked? It is asked that what will be this much angle. This angle is asked. ये पूछा गया है कि what will be the angle of reflected ray with the surface of the mirror. This is surface of the mirror, or we may say plane of the mirror. Okay. Yes, this is mirror surface. Okay, mirror surface. Okay, then this is incident ray and it has been given incident angle is 30 degree. So by the law of reflection, reflected angle will also be 30 degree and this angle will be 90 minus 30 degree. Okay, it will be equals to 60 degree. So the answer will be the angle between reflected ray
and mirror surface will be equal to 90 minus 30. कितना हो जाएगा 60 degree. Okay, this will be the answer. Okay, why it is so? Because this angle is given and the reflected angle means normal angle between normal and reflected ray. This will also be 30 degree. Now it has been asked what will be the angle between reflected ray and mirror surface. Then this will be, as this whole angle will be 90 degree. Okay, so this angle remaining will be 90 minus 30, 60 degree. This is how we will solve. Now, short answer type question exercise has been completed. We will do more questions.